learn about the special substances which actually help us to identify the given substance as acid or a base, and those substances are called as indicators. तो indicators हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं ऐसे, जिनका यूज करके हम कोई भी गिवन सब्सटेंस को बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है. सो बेसिकली आप कह सकते हो कि दे आर यूज्ड टू कंडक्ट द फिजिकल टेस्ट. दे आर यूज्ड टू कंडक्ट द फिजिकल टेस्ट. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप इंडिकेटर को डिफाइन कैसे करोगे, सो यू आर गोना राइट दैट indicators are the chemical substances which bring about the change in themselves. मतलब indicators कुछ ऐसे special chemical substances होते हैं जिनको जब हम treat करते हैं acid या base के साथ, तो वो अपने अंदर कुछ particular change लाते हैं. राइट, सो दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन देमसेल्व्स. और ये जो चेंज होता है ये उनके कलर में हो सकता है, ये उनकी फ्रेग्रेंस में हो सकता है. सो दे कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन देमसेल्व्स, एंड व्हेन दे ब्रिंग अबाउट द चेंज, they bring about the change when they are treated with acid or with a base. Got it? So this is how you're going to define कि indicators कुछ ऐसे substances होते हैं जिनको जब हम acid या base के साथ react करते हैं तो उनके अंदर change produce हो जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो given substance है वो acid है या base है, क्योंकि वो एक desired change indicator के अंदर produce करते हैं. desired change का मतलब acid का एक अलग change होगा, एक अलग effect होगा indicator पे, और base का एक अलग effect हमें indicator पे देखने को मिलता है. Got it? तो इंडिकेटर्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे पास बहुत से इंडिकेटर्स हैं. नेचुरली अकरिंग भी है और मैन मेड इंडिकेटर्स भी हमारे पास है. तो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स का मतलब है जो नेचर में एज सच मिलते हैं. And you know that the naturally occurring indicator, the most popular one, or you can say the most common one, is the litmus solution. It is the litmus solution. जो litmus solution होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जैसे मैंने आपसे बोला कि it occurs naturally. So it is obtained from lichens. It is obtained from lichens, and this is how the lichens look like. And basically lichens होते क्या है? आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. Lichens is a symbiotic relationship of fungi and algae. मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दो पार्टनर्स इकट्ठे रहते हैं और म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते हैं. So it is the association, the symbiotic association of fungus with algae. And in this association, algae prepares the food and fungi help in the absorption of water and the minerals. That is the reason we call this association as a symbiotic association, and it is one of the application of parasitism. Got it? तो lichens से हमें obtain होता है litmus. lichens से हमें क्या obtain होता है? litmus. तो अगर हम original color देखें litmus का, तो original color इस तरीके से होता है. That is, it is purple in color. The original color of litmus is purple. But जब हम इसको लैब के अंदर यूज करते हैं, we use it as a blue litmus or a red litmus. ठीक है, तो ओरिजिनल कलर आपके पास पर्पल है, बट जब हम लैब में यूज कर रहे हैं तो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस की फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं. अब जब इस लिटमस सॉल्यूशन को, मतलब ब्लू लिटमस या रेड लिटमस को, जब आप एसिड या बेस के साथ ट्रीट करोगे या न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ट्रीट करोगे, तो इसके कलर के अंदर चेंज आ जाएगा. इसके कलर के अंदर एक सेट चेंज हमें देखने को मिलेगा. लाइक व्हेन वी विल ट्रीट दिस लिटमस, that is the blue litmus with acid, so acid turns blue litmus red. तो एसिड को जब हम ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करते हैं तो एसिड ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देते हैं. ठीक है, बट व्हेन एसिड्स आर ट्रीटेड विद रेड लिटमस, तब वो इसका कलर कुछ भी चेंज नहीं करते, क्योंकि उनका इफेक्ट ही क्या है? ब्लू लिटमस टू रेड. और ऑलरेडी यहाँ पे लिटमस जो आप ट्रीट कर रहे हो दैट इज रेड, सो ऑब्वियसली द रेड लिटमस इज गोइंग टू रिमेन एज रेड ओनली. ठीक है, बट अगर हम बेस की बात करें, बेस जो होते हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. दे शो द इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस, और रेड लिटमस का कलर वो किस में चेंज करते हैं? टू ब्लू लिटमस. बट इफ यू विल ट्रीट ब्लू लिटमस विद बेस, देन यू वोंट सी एनी काइंड ऑफ चेंज, क्योंकि उनका इफेक्ट ही यही है कि वो रेड लिटमस पे एक्ट करते हैं एंड चेंजेस टू ब्लू इन कलर. Got it? So this is how acid and base bring about the change in the color of a red or a blue litmus. But if you will treat the litmus solution with a neutral substance, let's say water, then the color won't change. क्योंकि जो neutral substance है वो litmus के color में कोई भी change नहीं लाएगा. Got it? So you
can see the change in the litmus solution, the color of the litmus solution, when you treat it with acid or a base. Got it? Now moving on to the another indicator, that is the man-made indicators. We have lot of man-made indicators, and here in this session we'll be taking the two common man-made indicators. One is phenolphthalein. And the other is methyl orange. So let's pick phenolphthalein first. So phenolphthalein is a colorless indicator. This is how it looks like. Right, the original color is that it is colorless. It doesn't possess any fixed color. It is colorless. But when you treat this colorless phenolphthalein with acid, then acid won't bring about any change in it. That means it is going to remain colorless only. But if you will treat this colorless phenolphthalein with base, that is a compound with OH negative ion in it, or a compound which has a tendency to produce OH negative when it is dissolved in water, then it is going to turn this colorless phenolphthalein into a pink color. So you have to remember this, that acids doesn't show any effect on phenolphthalein. Phenolphthalein remain colorless only. But if you treat colorless phenolphthalein with base, then it turns the colorless phenolphthalein to pink. But if I say that I have a pink color phenolphthalein and I am treating it with acid, then what will you see? Obviously, it is going to change the pink color of phenolphthalein to colorless, because acids make phenolphthalein colorless. Got it? Now moving on to the another artificial or a man-made indicator, we have the another one, that is methyl orange. As the name suggests, the original color of methyl orange is orange. But when you treat this methyl orange with acid, then acid changes the color of methyl orange from orange to red. Or you can write reddish pink. This is how it looks like. Right, but if you treat a methyl orange with orange color with a base, then it turns the orange color of methyl orange to yellow. So you have to remember कि acid का जो effect है methyl orange पे क्या है कि वो orange को reddish pink कर देते हैं, but base जो है वो methyl orange का color orange से क्या कर देते हैं, yellow. Got it? So this is how the indicators are used. तो जितने अभी तक आपने indicators पढ़े, ये इन सब में color change आ रहा था, मतलब इनके color में आपको changes दिख रहे थे. So beside these indicators, we have the another category of indicators, that is the olfactory indicators. Now what do I mean by olfactory indicators? Olfactory indicators are something which bring about the change in their smell, not in their color. They bring about the change in their smell, and when they do so, when they are treated with acid or base. And to commonly use olfactory indicators are the onion extract and the vanilla extract. These two are the commonly used olfactory indicators. Got it? So when we treat acid or a base with olfactory indicators, whether we talk about onion or of vanilla extract, we know that these two substances, they have a characterized smell. Right? So when you treat these two indicators with bases, then what happened? The original smell of these onion and the vanilla extract goes off. But when you treat it with acid, then the smell of both is retained. So in other way, you can say that the basis actually vanishes the smell of the olfactory indicators. That is, the characterized smell goes off, but if you treat it with acid, their characterized smell is retained. Got it? So this all which we have learned, that is about the litmus solution, about the phenolphthalein, about the methyl orange and olfactory and the vanilla extract. So these are particularly called as indicators, and they are used to conduct the physical test in order to check that whether the given substance is acid or base in nature. Got it? So this is all about indicators. I hope you got it, where we are going to explore more about this chapter. Thank you.